अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम डॉक्टर वाजिद शबीर है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे MRCP पेसिस के स्टेशन 2 के बारे में, दैट इज़ हिस्ट्री टेकिंग। वैसे तो इट इज़ द इजीएस्ट स्टेशन इन MRCP पेसिस, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे होता है कि कैंडिडेट्स दे टेक डिटेल हिस्ट्री, इवन दे रीच द करेक्ट डायग्नोसिस, लेकिन उसके बावजूद दे फेल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे स्टेप्स हैं विच आर यूनिक टू हिस्ट्री टेकिंग इन MRCP एग्ज़ाम, जो कि बाकी एग्ज़ाम में नहीं होते। सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, आपने 5 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी हैं वाइल गोइंग फॉर हिस्ट्री टेकिंग एग्जामिनेशन। और याद रखें, ये 5 बातें आपको किसी भी हिस्ट्री टेकिंग की बुक से नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहली बात, while taking history in MRCP exam, you have to maintain a proper eye contact with the patient for most of the time. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि लिसन टू द पेशेंट, आस्क फॉर द कंसर्न्स एंड एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ पेशेंट। नेवर एवर इग्नोर द कंसर्न्स ऑफ द पेशेंट। इसी तरह ऑलवेज शो एम्पैथी। हिस्ट्री टेकिंग के दौरान जब भी पेशेंट आपको अपनी कंप्लेंट्स बताता है तो बी एम्पैथेटिक टू द पेशेंट। और लास्ट थिंग इज that when you finish the history taking, give a clear management plan to the patient. So now let's go into a bit more detail of this history taking station. So like any other station, this station also has 20 minutes. Before the 20 minutes, आपको 5 मिनट मिलते हैं when you sit outside the station. Or these 5 minutes, these are very important. They decide how you perform inside the room. So when you go outside the station, आपको एक सिनेरियो दिया जाता है which is most of the time a GP letter. वो आपने गौर से पढ़ना है. You have got pen and pencil over there as well. तो पहला काम ये करना है कि वो जो जीपी लेटर है उससे चीफ कंप्लेंट्स, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट है, यू मस्ट राइट इट डाउन विद यू सो दैट योर फोकस शुड बी ऑन दैट कंप्लेंट व्हाइल टेकिंग द हिस्ट्री। यू कैन नोट डाउन और रिवाइज इन योर माइंड द क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू आस्क अबाउट दैट पर्टिनेंट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। इसके साथ साथ आपने एटलीस्ट 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस सोचनी है उस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की, और वो अपने पास पेपर पे लिख लेनी है। और यू शुड बी एबल टू नाउ एंड आस्क अबाउट 3 क्वेश्चंस अबाउट ईच ऑफ दोज 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस टू रूल दोज डिफरेंशियल डायग्नोसिस आउट। सो एक पूरा एक प्लान बनाने में आपको तकरीबन 5 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद द बेल रिंग्स एंड यू गो into the room where you'll find the examiner and a patient, और and you start taking the history taking के जो steps हैं, ये जो pattern है, it is similar to any exam whether it is undergraduate or postgraduate, which consists of presenting complaint, history of presenting illness, systemic inquiry, past history, social history, family history, drug history, any allergy history. So you must know that. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पेसिस एग्जाम में आपने बायोडाटा की ज़्यादा डिटेल नहीं लेनी। यू जस्ट नीड टू कंफर्म द नेम ऑफ द पेशेंट, और आपने पूछना है कि मिस्टर XYZ, व्हाट वुड यू लाइक मी टू कॉल ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, यू कैन मेक नोट्स वाइल टेकिंग द हिस्ट्री, लेकिन आपने शुरू में ही पेशेंट से पूछ लेना है कि कैन आई टेक नोट्स वाइल वी टॉक अबाउट योर इलनेस। यूजली दे से कि यस यू कैन टेक द नोट्स, बट इस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि डोंट राइट टू मच, जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें। और वाइल टॉकिंग टू द पेशेंट मेंटेन अ प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट का पूछना है, उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस के मतलब कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, सिस्टेमिक इंक्वायरी का पूछना है। और इसमें
स्पेशली जो MRCP पेसेस में, स्पेशली दोज हु आर अपीयरिंग इन यूके, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सोशल हिस्ट्री. Normally, from the background where I come from, we don't give much respect to social history. हम यूजली पूछते हैं कि कितने लोग रहते हैं, कमाने वाले कितने हैं और गुजारा हो रहा है या नहीं हो रहा. लेकिन MRCP पेसेस में आपने ज़रा डिटेल में सोशल हिस्ट्री पूछनी है, स्पेशली लिविंग कंडीशन एट होम, what is the job situation, any stressors at the job, because when at the end of the history you are giving a plan to the patient, management plan to the patient, तो आपने उन चीज़ों को भी एड्रेस करना है about the social situation of the patient. तो आपके पास तकरीबन 14 मिनट्स होते हैं पेशेंट से इंटरेक्ट करने के लिए. After the 12 minutes they ring a bell, just to let you know that you have 2 more minutes to talk to the patient, and you should practice history taking within those 14 minutes अपने कोलीग के साथ या ड्यूरिंग वार्ड जब पेशेंट के साथ इंटरेक्शन होता है तो यू शुड प्रैक्टिस कि आप अपनी हिस्ट्री 12 मिनट्स में कंप्लीट करें, और नेक्स्ट 2 मिनट्स जो हैं उसमें आप पेशेंट से उसके कंसर्न के बारे में पूछें, उसके कंसर्न्स को एड्रेस करें, और अगर आपके पास उसके बाद टाइम बचता है तो यू कैन समराइज द कन्वर्सेशन विद द पेशेंट. आफ्टर दैट 14 मिनट्स यू गेट 1 more minute to reflect whatever you have asked, और अपनी thoughts को गैदर करने के लिए आपको टाइम मिलता है. In the next 5 minutes they are for the examiners to discuss the case. Usually the examiner will ask question about your history, about the presenting complaints, any differential diagnoses, आपका management plan क्या होगा, and any concerns that patient raised during the history taking. So it's usually a easy station as far as examiner questions are concerned. बाकी ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि पढ़ना कहाँ से है हिस्ट्री टेकिंग. तो इसके लिए आप राइडर एंड मीर वॉल्यूम 2 में हिस्ट्री टेकिंग के 50 केसेस हैं. यू कैन गो थ्रू देम, दे आर सफिशिएंट इनफ, एंड प्रोबेबली इट इज likely chance in most of the cases, about 90% cases, that you will get a case from those 50 cases. The important bit is don't underestimate this history taking station. Practice करें with your colleagues or during your ward with interaction with the patients, and try to take a proper thorough history with a management plan within 14 minutes. It would definitely help you during the examination. Hopefully आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. If you have any questions you can ask in the comments. For more videos stay tuned and don't forget to subscribe our channel. Allah Hafiz and take care till next time.